शुभोदय मित्रों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी ये 9 दिन का नवरात्रि उत्सव के समय हमने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है जागृति, इस कार्यक्रम का पहला दिन है और हमारे साथ है डॉक्टर न्यूटन कोंडाविटी, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, जिनकी वजह से डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी की वजह से हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। लेट्स ऑल वेलकम देम। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर टुडे। Thank you, Harika. It's wonderful. हार्दिक शुभकामनाएं, सबका शुभकामनाएं. Wish you happy Navaratri. Wonderful, wonderful. And dear friends, I'll be taking the help of Mr. Hitesh Vasisht for the translation. He agreed to help me in translation. Thank you, Hitesh, for coming forward. And dear friends, it's such a pleasure to meet you all on this auspicious day, beginning of Navaratris. मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आज एक बहुत सुंदर दिन पर हम मिले हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है। And why we are doing this 9 days Jagruti, this program's name is coined as Jagruti, wake up call, and particularly with the theme of Samruddhi. I'll tell you the whole theme. Samruddhi हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. Abundance is our birthright, and we just need to claim it. तो दोस्तों, जो आज के दिन हम शुरुआत करने वाले हैं, एक सार से, एक विषय से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमने इसे नाम जागृति दिया है। तो जागृति किस प्रकार की? जागृति समृद्धि की जागृति जो बताती है कि समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। And all of us, we have hidden potentials, and each one has that same potential, just like the other. You, me, and everyone has the same potential. We are the same divine beings. हम सबके अंदर छुपा हुआ सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य जो मुझ में भी, आप में भी और सब में भी एक समान है, और यह सामर्थ्य जो हमें बताता है कि हम दिव्य आत्माएं हैं। And only thing that's needed is awaken it. और जो चाहिए वो ये है कि हम इसके प्रति, इस सामर्थ्य के प्रति जाग जाएं। One of the beautiful expressions of this divine in us is abundant nature of us. और इस सामर्थ्य का जो हमारे भीतर एक व्यक्त करने का भाव है, वो ये है कि हम बहुत समृद्ध आत्माएं हैं। So these 9 days are dedicated for awakening that beautiful energy of feminine, at the same time the samruddhi, the abundance nature in us. तो ये जो 9 दिन है,
ये दिन हम लगाते हैं कि हम अपने भीतर इस दिव्यता को जगाएं और हमारे अंदर जो मातृत्व का तत्व है, मातृ तत्व, उसको भी हम इस चीज से बढ़ाएं, अपने अंदर फलित करें। So let me first share about a little bit significance of these Devi Navaratris. Why do we really celebrate in a grand way, not only in India, across the globe? It is everywhere actually. But in India, primarily, we really do that as a big celebration. तो मैं पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि क्यों हम नवरात्रि मनाते हैं और देवी की पूजा करते हैं। मुख्यतः हम सबसे ज्यादा भारत में करते हैं। Why only we call this Devi Navaratris? Why not Deva Navaratri? Means not a masculine Navaratri, but a more feminine Navaratris. We do get these kind of doubts when we are thinking with our minds. Let me clarify that. तो हम इसे देवी के नवरात्रे ही कहते हैं, किसी देवता के, किसी देव के नवरात्रे क्यों नहीं कहते? तो पहले मैं इस चीज पर बात करना चाहूंगा। So there are many Puranic stories in India which talks about why these Devi Navaratris are celebrated. हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि हम क्यों नवरात्रे देवी को देते हैं, अर्पण करते हैं। In Devi Bhagavatam, Devi Puran, we hear one of the stories is there is a Parameshwari Mata who is in the primordial state, and she is always there, all pervading energy, all pervading Shakti. But one of the asuras called Durgamudu, I don't know how to put it in Hindi. How do we pronounce it in Hindi language? But in Telugu, Durgamudu, Durgama. दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। Durgamasur is one of the Asura. So in the story, this Durgamasura is creating such a havoc in all the worlds, including the Brahmalok. Even Brahma is so much scared, and it is like that. And they're all so much, in chaos in every world, all beings who are residing in all the worlds. So Parameshwari has to intervene. Parameshwari took the form of Durga Devi. And because this Durgamasur has a tendency to go appear in all directions, she has, all 10 directions, she was all pervading, created her 9 forms, and one main form of her Parameshwari Jagannatha is in one state, one direction, and all the 9 directions she surrounded Durgamasur. And finally Samhar, Mahishashura Mardini, and all that, asuras were, you know, were demolished and killed during the story. And that's a Puranic story. There is a deep spiritual significance, deep inner meaning to this story. Without understanding this Lakshard, we will miss the essence of what we really practice during Devi Navaratri. तो देवी भागवतम के अनुसार एक कहानी है जो बताती है कि परमेश्वरी देवी जो मूल तत्व में इस प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, और जब दुर्गमासुर ने अपना बहुत सारा हाहाकार मचाना शुरू किया, ना ही केवल धरती पर ब्रह्मलोक में भी, तब इस परमेश्वरी देवी ने दुर्गा का रूप लिया। और दुर्गमासुर हर दिशाओं में जो काम कर रहा था, तो देवी ने इस प्रकार का रूप लिया कि वो हर दिशा में उसको कहीं ना कहीं पकड़ सके और उसका सामना कर सके। और इस प्रकार से ना ही केवल उसका और बहुत सारे राक्षसों का, जैसे महिषासुर और भी बहुत सारे राक्षसों का मां ने मर्दन किया। So here we understand the meaning of the word Durgamasur. Durgama
means in Sanskrit or in Telugu and all Indian languages, which means something which is like obstructing, which is uh, very difficult to conquer it, difficult to overcome that limitation or an obstacle, a block. तो दुर्गमासुर का अर्थ क्या है? दुर्गम अर्थात जो मुश्किल है, जिसको हासिल करना, जिसको जीतना मुश्किल है. For example, there is a stone, there is a big stone, the river is flowing. If there is a block, the flow of the river is cut off. There is no flow that occurs. So this is also a durgama, then obstacle that has come. And one more example I'll give. You are making a high jump. You have to make a high jump because you have to cross something there. And there is a high something which is kept like a pedestal, which you have to cross it. It's a durgama. You have to cross that. You have to overcome that. You have to raise above that to overcome that. दुर्गमासुर के बारे में समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. जैसे कि एक नदी बह रही है और नदी के बहते हुए क्षेत्र में अगर एक पत्थर या एक कुछ रॉक जैसा रख दिया जाए तो नदी को बहने में अड़चन होगी. और दूसरा, जैसे कि आपको एक ऊंची छलांग लगानी है और उस ऊंची छलांग लगाने के लिए जो बीच में अगर कोई पड़ाव या कोई अड़चन रखी गई है, उस अड़चन को हम दुर्गमासुर कह सकते हैं. So even for everyone in their life, there are durgamas. There is an asura in us which creates blocks. It's all self-inflicted blocks. It's all self-inflicted blocks, self-limiting thoughts, self-limiting beliefs, self-frozen energies. Everything is self, which is in avidya, in ajnana state, which creates these internal blockages. That is actually the nature of the Durgamasur, who creates really a hell for everyone. तो हम सब भी अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से दुर्गमासुर को अनुभव करते हैं. दुर्गमासुर और कुछ नहीं, पर हमारे खुद के ही बिलीफ सिस्टम, हमारा खुद का ही जो सोचने का दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो हमारे जीवन में एक तरह से बाधा बनता है. And this Durgama can be only conquered with awakening the Durga Mata, Durga Devi's energy. So the Parameshwari, who has manifested herself as the Durga, Navadurgas, 9 forms of the Devi, who has conquered all these 9 kinds of blockages inside us, and finally reached to a finest state of abundance, finest state of joy, final state of what is called as, we may call that as the great day of celebration, Vijaya Dasami. The 10th day we really celebrate Vijaya Dasami. This is a celebration of the success of all the limitations that we come across internally and externally. इसीलिए इस दुर्गमासुर अर्थात अविद्या या अज्ञान को अगर हमें जीतना है तो हमें देवी, दुर्गा देवी की सहायता लेनी पड़ती है. दुर्गा शक्ति को, उस तत्व को अपने भीतर जगाना पड़ता है. और जो 9 दिन हम चलते हैं, 9 पड़ाव जो देवी से हम पूरे करते हैं, और आखिरी दिन 10वें दिन हम विजयदशमी मनाते हैं. वो त्योहार जो आनंद का, जो जीत का, जो सेलिब्रेशन का, जो आत्मबोध का त्योहार है. So one principle in the universe that we keep hearing is Brahmand is residing in Andand, Pindand, means whatever that is in the macrocosm is residing in the microcosm inside us. So this Durga, Durgamasur and Durga Devi, whatever that happened, Durga Devi did samhar, Durgamasur ka samhar kiya. So all that story is also internally happening in us, in a microcosm of our lives. It's happening in
all of us. There is a Durgamasur inside us. That's why these Navaratris is dedicated to Durgamasur ka samhar करने के लिए ये नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं इन इंडिया, भारत देश. तो हमारे सृष्टि का एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहता है यत् पिंड तत् ब्रह्मांड, या जो ब्रह्मांड बाहर की तरफ है वैसा ही ब्रह्मांड हमारे अंदर, वैसा पिंड हमारे अंदर चल रहा है. अगर हम दुर्गा देवी और दुर्गमासुर को बाहर देखते हैं, ठीक उसी प्रकार की ऊर्जा हमारे भीतर भी चल रही है, और ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर विद्यमान है. So dear friends, our goal is actually reaching to the final states of refined consciousness. The goal of spirituality is to know the unknown, to know the unknowable, because we know already this perceived world through all the five senses. We perceive this world. This is known world. This is called Vyakta Rupa Avyakta. Means whatever is unexpressed, inexpressible, which is expressed in the physical plane. This is the Vyakta Rupa. Outside what we see, Prakriti, is entirely is the manifestation of that potential, that which is still remains as potential, hidden potential, which is the Vyakta Swarupa, the Prakriti. And there is a Purusha. Purusha is not masculine, Prakriti is not feminine, but we always equate that way, Prakriti and Purusha, because the Tattva, Prakriti Tattva is more of feminine nature. And Purusha is consciousness, the Tattva is more of masculine in nature. That's why we call that as masculine and feminine. It does not mean that it is really a male gender. It is not related to gender. It's more related to the principles in the universe. तो हमारी स्पिरिचुअल साधना, जो आध्यात्मिक साधना है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है हमारी चेतना का विस्तार करना, हमारे अंदर इस चेतना को एक हर समय एक अलग स्तर पर लेकर जाना. और यह शक्तियां, जैसे कि अपना जो परोक्ष है, जो दिख रहा है, जो व्यक्त है, और अव्यक्त के बीच में जो संबंध है, जैसे कि जो दिख रहा है और जो जानते हैं हम, स्पिरिचुअल साधना है जो नहीं जानते उसको भी जानना. प्रकृति एक व्यक्त स्वरूप में हमारे सामने है और पुरुषा अव्यक्त स्वरूप में हमारे इर्द गिर्द है. और ज्यादातर हम प्रकृति पुरुष की जब बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष से इसे जोड़ते हैं और लिंग में इसे विभाजित करते हैं. वास्तव में यह दोनों ऊर्जाएं हमारे अंदर हैं, और इसी शक्ति को जो पुरुष है, जो पुरुष तत्व है, उसे हम चेतना कहते हैं, और स्त्री तत्व जो है उसे प्रकृति की चेतना कहते हैं, प्रकृति शक्ति कहते हैं. So, dear friends, there is a story again in Devi Bhagavatam that when the Devi Ma, Jaganmata, Durga Mata was in a very fierce form, very violent, she's dancing, and all the worlds are vibrating, and they could not tolerate that because the high vibrational levels, and nobody could stop her. Nobody could stop her because she's so ferocious, so fierce, so aggressive. And at that moment, Lord Shiva has to intervene. He has come in front of her and asking her, but she's not listening. Then he took the form of a Balarupa, a very, very small, innocent baby, and lying down on the floor. And suddenly, Durga Ma kept her feet on this baby, but it was so tender. She looked at, who is this baby, innocent baby, who is very tender, who is on under my feet? And she stopped there. All her ferociousness stopped. So this is one of the stories. Another story says that Lord Shiva was on the ground and she's dancing on the body of Lord Shiva. So it means that the Devi
the Prakriti, the Shakti is dancing on the platform, on the background of the consciousness, because Shiva is the consciousness, and Durga Mata, Devi Mata is what is called Shakti. It's the interplay of between consciousness and Shakti. तो ऐसी ही एक कहानी और जो देवी भागवतम में दी गई है वो उस समय की है जब देवी माँ अपने भयंकर रूप में डांस करती हैं, नृत्य करती हैं, और उस नृत्य के कारण पूरी सृष्टि में हाहाकार मचने लगता है। वो रुकती नहीं है, कोई भी उनको रोक नहीं पाता है। अंत में भगवान शिव को आना पड़ता है और भगवान शिव आकर एक बालक का रूप लेते हैं और धरती पर लेट जाते हैं। जब माता डांस करते हुए, नृत्य करते हुए अपना पांव उस छोटे से बालक पर रख देती हैं, तब वो देखती हैं कि मैंने किस पर अपना पांव रख दिया, और शांत होने लगती हैं। एक और कहानी जो बताई जाती है वो ये है कि भगवान शिव के ऊपर देवी माता नृत्य करती हैं। ये वास्तव में एक भीतर छिपी हुई बात को, जो रहस्यमय बात है, उसको बताने का लक्षण है कि प्रकृति किस पर आधारित है? पुरुष पर आधारित है। शक्ति चेतना पर आधारित है। शक्ति चेतना पर ही नृत्य करती है। So, dear friends, without knowing about our Shakti, without knowing about energy in us, we cannot realize our consciousness. If our goal is to realize who we are, we need to know first our energy inside us, because the energy inside us, somewhere it is blocked. And according to all the Bharat Desh ka Upanishad and Vedic wisdom, it said that there are many blockages inside, and particularly these 9 days or 9 asuras are there. We have to conquer all these 9 blockages inside us, and 9 asuras we have to cross. 9 asuras need to be, be transformed in us. So finally reaching to the culmination point of consciousness. तो वास्तव में दोस्तों, अगर हम अपनी चेतना का विस्तार पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी शक्ति का विस्तार करना होगा। जिसमें शक्ति का विस्तार होगा वो खुद ही चैतन्य स्वरूप बनेगा। हमारे वेद और उपनिषद बताते हैं कि 9 प्रकार के, जैसे 9 तरह के हमारे भीतर शक्ति के जो ब्लॉक्स हैं, जब हम उनको क्लियर करते हैं, इन बंधों को क्लियर करते हैं, तब हम अपने भीतर उस चैतन्य स्वरूप का विस्तार पाते हैं। So that's why we are all dedicating these 9 days. In Bangladesh, we celebrate these 9 days for overcoming these 9 asuras inside, 9 blockages inside us, to reach to the final state of great abundance, in great celebration, great joy, great wisdom, all that we can call it as. इसीलिए दोस्तों, भारत देश में हम नवरात्रि को मनाते हैं। नवरात्रि अर्थात जो 9 प्रकार के हमारे असुर हैं, जो बंधन बने हुए हैं, उनको खोलकर हम अपने परम स्वरूप को जानते हैं। Though it is not such a very simple explanation, Devi Navaratri is a very, 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 very deep subject, and it's not enough to convey it. We need to understand the deeper essence, the meaning, the lakshar, the deeper inner meaning of all that, whatever is expressed in Vedas, Upanishads, to understand Devi Navaratris. It is, but we understand today that in a very simplified form, the principles, very, very basic fundamental principles of awakening that feminine principle in us, Devi in us, which can conquer all the difficulties, blockages inside us, and reach to whatever that consciousness which has no limitations, no boundaries. It's unbounded consciousness and unlimited consciousness. And with that, everything is possible as a human being.
to manifest. हालांकि नवरात्रि के मतलब को समझना, उसके सार को समझना एक बहुत गहराई का काम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। पर एक अगर आसान तरीके से समझना हो तो हमें इस सार को समझना चाहिए जो हमने बात किया है। जब हम इस सार को समझते हैं और 9 दिन उस चीज पर काम करते हैं तो हमारे भीतर उस कॉन्शियसनेस का, उस चेतना का विस्तार होता है। So our theme is abundance is our birthright. What is abundance? We generally get confused only with the money. We think money is, you know, when we use the word abundance means money. It's not true. It's really far away from the truth. The truth is abundance has many aspects. We cannot call someone who is very sick and unhealthy and who has $1 billion or crores of money in their bank account, but they are very sick in the body and their mental health is not there. We cannot call them as abundant beings. तो आज का जो विषय है वो हमारा स्मृति है, और जब हम स्मृति की बात करते हैं ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ज्यादातर हम स्मृति को धन के साथ जोड़ते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा समृद्ध है, पर वास्तव में ये स्मृति की पूरी परिभाषा नहीं है। हम जैसे कि एक व्यक्ति को जो व्यक्ति बीमार भी है पर उसके पास लाखों रुपए उसके पास है, तो ऐसे व्यक्ति को हम जो बीमार है और बहुत सारे पैसे हैं उसे समृद्ध की परिभाषा में नहीं ला सकते। And also, we cannot call someone who is very foolish, very greedy, and but a lot of money with them, and we cannot call them as abundant beings. और ऐसे ही हम उनको भी समृद्ध नहीं कह सकते जो मूर्ख है, जो लालची है और जिनके पास बहुत सारा पैसा है, But not really generous, not really helping even the neighborhood people, and those people we cannot call them as abundant beings. और जो दयालु नहीं है, जो अपने पड़ोसी की सहायता नहीं कर सकते, हम उन्हें भी समृद्ध नहीं कह सकते। Who is an abundant being? What is true abundance means? तो समृद्ध व्यक्ति कौन है और समृद्धि की परिभाषा क्या है? If you know some definitions, you can put it in the chat box. You can type it in the chat box in Hindi. Hindi I understand, but I am not able to fluently speak. I'm sorry for that. And you can put it in the chat box, friends. It can be very interactive. And we will also have question and answer session. So at that time, you can also speak. And we'll also have today meditation also. One process that I'm going to facilitate. The process meditation will help you to realize whatever I am speaking right now. तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समृद्धि की परिभाषा लिखकर बता सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक मेडिटेशन भी कराऊंगा कि जो चीज हम बात कर रहे हैं हम उसको एक क्रिया के रूप में करेंगे और अंत में प्रश्न उत्तर भी लेंगे। Satisfied person have abundance. Someone who is in santrupti, contentment, contented person. जिस दिन आपकी चेतना का संपूर्ण विस्तार हो जाए, प्रचुरता या समृद्धि तब आती है। आशीष तिवारी जी, थैंक यू। मन की संतोष स्थिति, प्रशांति देशमुख जी, थैंक यू। अबंडेंस इन गुड रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ, सरिता जी, थैंक यू। एनलाइटेंड, रिच, कंपैशनेट, वंडरफुल, ज्योति मेहरा जी।
That's really good. And Magical Manjula G has written, what are the 9 blocks that I was talking about? She has put a question about this. There are 9 blockages. It's more like a symbolic, metaphorically, it is mentioned, because in the ancient Puranic stories, it is written as asuras. For example, there is an asura, uh, Sambhu Nisambhu, Rambha Karambha. There are around 9 asuras. These 9 devis have did samhar. And when we read Mahishashura Mardhini, it's all about, there are all the names of the asuras mentioned. These asuras each has a tendency. For example, one particular asura, maybe it comes on the 6th day or 7th day, where Kali Ma was awakened. This Kali Ma is a very ferocious. So this asura, when the Devi form was slaying that asura, all that blood drops were falling on that is creating one more asura. There are lakhs of asuras which are coming. So then this Kali Rupa was created. The Kali Rupa is nothing but the Devi Ma has extended her tongue, which has spread all the earth, on all the earth, everywhere on the earth, so that on her tongue, all the blood drops were falling, and this Rakta Bija is a asura. Means whatever drop that blood drop, from there one more asura comes. So all that she was drinking. So there are stories like that. There are around 9 asuras, which is like more of a metaphor. That is, metaphorically speaking, the language of symbols. So even internally, we have many, many, many blockages, but we have to identify these to overcome 9 challenges. Take care of these 9 states of consciousness, particularly from the Mooladhara. If you journey, it can be divided into 3 according to the 3 gunas. So, Tamoguna in the very lower chakras, in the middle portion, it's a Rajoguna, and Sattoguna is the higher, and the Nirguna in the third eye and the Sahasrara. So you divide it that way and you find exactly those blockages. But in the Tamoguna, we have many blockages. Tamoguna related blockages are plenty for all of us. Yeah. तो इसी प्रकार से जो 9 रुकावटों की बात करी, 9 असुरों की बात करी, इन सब का वर्णन आता है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में। और ये सब राक्षस हैं, जैसे कि चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, ये सब राक्षस। और जैसे कि छठे दिन माता ने काल रात्रि का रूप लिया, काली का रूप लिया, और उसमें जैसे एक राक्षस था रक्त बीज, वो जहां भी उसका रक्त गिरता था वो एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो उसका मर्दन करने के लिए माँ ने अपनी जीवा को पूरी सृष्टि पर फैलाया, ताकि जो भी रक्त गिरे माँ की जीवा पर गिरे और माँ उसे पी ले। इस प्रकार से माता ने रक्त बीज का अंत किया। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो राक्षस हैं, ये सब रूपक हैं। रूपक यानी कि कुछ संकेत देते हैं, कि किसी विषय विषाद का संकेत देते हैं, जिसको हमें जो असुर के रूप में बताया जाता है, जिस पर हमें विजय प्राप्त करनी। So we can speak many things about how at the Mooladhara, at the root chakra level, we also have many blockages. Lack of trust, mistrust, lack of safety is one thing which is which creates such lack of abundant states in us. And also in Swadhisthana level, your emotional blockages that we carry, that also is a blockage, a big blockage. Many of the blocks we have in Swadhisthana. And also Manipura,
where Manipuraka, where you find there is a blockage called lack of powerless feeling, and also victim feeling, and lack of confidence, lack of you know initiative, lacking in taking initiative, and all that. And also Anahata Chakra is where you have this kind of blockages. The Asura that's residing here will be more related to blocked love which is not expressed, which is more internal. It has become more of a dvesha, means hatred. Instead of love, what is coming out, spilling out is more dvesha. So, because love which is not expressed, for example, you have lot of love, but which is blocked, you felt a lot of hurt. What comes out from your heart is dvesha. You will be scolding and very angry on your near and dear ones, but you are very loving being, but still it is expressed in that way. There is an asura here in Anahata Chakra. And Vishuddha also is a big Ashura here, one of the biggest Ashura, biggest demon here in Vishuddha, in the throat chakra, which is the highest creativity. But this is also the major blockage center, which all of us have, and which is nothing but, fear of expressing the creativity, fear of manifesting yourself in the physical reality as an abundant being, establishing yourself as an abundant being, the fear of even communication, fear of speaking the truth, and uh, we fear our own creativity, such a vast creativity that we have. तो हमारे जो शक्ति क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण हमारे नीचे के चक्र, जहाँ पे हमारे बहुत सारे जो विषय विषाद हैं या जो पुराने कर्म है, बैगेजेस हैं, वो पड़े हैं। रजोगुण हमारा यहाँ पे, और सत्वगुण ऊपर की तरफ जैसे आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर हम इन्हें निर्गुण स्वरूप कहते हैं। हमारे नीचे मूलाधार चक्र में जैसे ब्लॉक, जिसकी हम बाधा की, असुर की बात करते हैं, वो हो सकता है कि किसी चीज पर विश्वास ना कर पाना, अपनी समृद्धि को पाना और हर चीज में एक गरीबी का अनुभव करना। स्वादिष्टान चक्र का जो ब्लॉक होता है, वो होता है अपने इमोशंस को व्यक्त ना कर पाना, अपने भावों को व्यक्त ना कर पाना, उनकी कमी महसूस करना। मणिपुर चक्र का जो हमारा रुकावट होती है, वो होती है शक्तिहीन महसूस करना। और अनाहत चक्र, जिसे हम कहते हैं कि जब हम राग द्वेष अपने भीतर महसूस करते हैं, अपनी चीजें दिल को लगा लेते हैं, दुख पीड़ा को दिल में लगा लेते हैं। प्यार तो हम बहुत करते हैं, पर जब भी हम किसी से व्यक्त करते हैं तो उस दुख पीड़ा और द्वेष के भाव से करते हैं। और फिर हमारा विशुद्धि चक्र, जब हम अपने सत्य को बता नहीं सकते, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को एक रूप नहीं दे सकते, तब हम इसे यहाँ का बंध और सबसे बड़ा बंध या असुर कहते हैं। So these are all the internal blockages that we all have. So it's like archetypally it is mentioned as 9 blocks. There could be many more blocks, but the 9 are the major ones, which we metaphorically speaking. And Magical Manjula ji, this is the answer for your question. Thank you. तो ये 9 प्रकार के बंध हैं, या बंधन है, या रुकावटें हैं। रुकावटें बहुत तरीके की हो सकती हैं, बहुत प्रकार की हो सकती हैं, पर मुख्यतः हम 9 प्रकार के इन बंधनों की बात करते हैं। मंजुला जी, आशा करते हैं आपको आपका उत्तर मिल गया। And there's one more definition. Anjali Kundanan ji. Peace, happiness, blissful is prosperity. Meenu Goenka ji. Happy and healthy in life is abundance. Maitreyi Patil ji. Knowing that we all have everything. Thank you. Shraddha Dhanuka ji. Abundance is state of contentment and serve humanity. Ranju Goyal ji, consider equal to all. Rajat ji, happiness. Kalpita Dikshit ji,
Oh, okay, okay. That's Raktabij Asura was mentioned there, the name of the Raktabij Asura. Seema Rajeshji, abundance is a state when we are in state of joy, love, peace, happiness, bliss. Hina Desai ji, physically, mentally, emotionally healthy and strong. Sudha Patil ji, happy and healthy life in abundance, joy, love, peace, happiness, bless. Okay, that's wonderful. Very beautiful, friends. All of you uh, really expressed what is abundance state. It's not just money. People really mistaken abundance for money. That's why they run after money. More we are running after money, more money leaves. It moves away. Goes far away. And instead, we need to increase what is called internal abundant state, inner abundant feeling, generate that feeling, which magnetizes all that samruddhi. There are 8 aspects of samruddhi that we talk, Ashta Lakshmis we speak in India, and all those 8 aspects of the abundance will come to you. Ashta Aishwaryas will come to you. इसीलिए जब हम समृद्धि की बात करते हैं, केवल उसे धन तक सीमित नहीं रखते हैं। जो समृद्धि को धन समझ के धन के पीछे पीछे भागता है, धन उससे उतना ही दूर जाता है। अगर हम धन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं या किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो भीतर की समृद्धि को हमें जगाना होगा, उसको एक्सपैंड करना होगा, उसका विस्तार करना होगा। हम अपने शास्त्रों में, अपनी भारतीय सभ्यता में अष्टलक्ष्मी की बात करते हैं, 8 प्रकार की जो समृद्धि है उसकी बात करते हैं। उन सबको हमें अपने भीतर जब जगाना हो, जब जागती हैं वो, तब हम वास्तव में समृद्ध बनते हैं। So, dear friends, whoever has come to know about the godhood or Bhagavan, they are known as Bhagyavan. These words are so connected because in our language, it's coined in such a beautiful way, the words. We need to know about this. Bhagyavan. We need to all become Bhagyavans. Then really we feel blessed, we feel rejoicing, we feel celebrating, we feel like dancing in our lives. तो दोस्तों, अगर हम उस ईश्वरीय तत्व, भगवान तत्व को जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम वास्तव में भाग्यवान हैं। भगवान तत्व को जानना, भाग्यवान बनना, और इस भगवान भाग्यवान तत्व को जगाना, यानी कि एक एक आनंद के भाव में, उत्साह के भाव में, या एक तरह से सेलिब्रेशन के भाव में जाना। And most of us, when we lack something in our life, there is a limitation. It forms a trigger for us to look for it, to create that. For example, I have sickness in my body. I want health. So if I ask you, what is your sankalpa? What is your wish? What is your intention? You create an intention that I want health. So you are creating intentions from your lack state. For example, someone has poverty. There are loans, there are debts, and they could not pay their bills every month. And that's why they say, I need a lot of money because I have to pay my bills. It's all coming from scarce and a lack condition. And a lack only perpetuates lack because the background, the energy in which you are creating a thought form, an intention, has so much power to it. That's why I'm going to share with you a process
how to create an intention, not from the lack, but an abundant state. तो बहुत बार जब भी हम अपने जीवन में कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, हम कमी की ऊर्जा से चलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो आपको संकल्प रखने के लिए कहा जाए, तो आप कहेंगे मुझे अच्छा स्वास्थ्य नहीं है और मुझे स्वास्थ्य चाहिए। वास्तव में जो भी आप संकल्प रख रहे हैं, आप कमी की ऊर्जा से रख रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा लोन है और लोन के माध्यम से वो काम करता है कि मैं अपने बिल्स नहीं पे नहीं कर पा रहा, और उसके माध्यम से और ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में उसके बीज में वो कमी पड़ी है और कमी के तत्व से ही वो और चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जब हम कमी के तत्व से चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, तो वास्तव में हम कमी को ही अपने जीवन में और आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कमी से अपना संकल्प ना लेके एक समृद्धि के तत्व से अपना संकल्प ले। मैं आपको एक क्रिया करवाऊंगा। So you can create a thought form either from an abundant state of your being or from a lack state of being, because all these states are existing inside us, all of us. So we all have limitations, but when we are creating an intention, a thought form, a sankalpa, which is very, very powerful, but on the what basis you're creating this? If the background energy is a lack energy, this is not going to manifest. This intention has no energy to manifest. तो आप But अपने yeah, go ahead. तो आप अपने संकल्प को या कमी की ऊर्जा से बना सकते हैं या समृद्धि की ऊर्जा से बना सकते हैं। अगर कमी की ऊर्जा से बनाएंगे तो सब कुछ ही कमी पर ही आधारित होगा, पर अगर आप समृद्धि की चेतना पर बनाएंगे, समृद्धि की ऊर्जा पर बनाएंगे, तो सब कुछ समृद्धि से ही आकर्षित होगा। For example, some look for bright very radiant relationships, harmonious relationships, and some who are not married. Oh, I didn't get married. I need a partner. I need a partner. But there is desperateness energy in it because it comes from a want and lack, and not having that. It is like a big negative energy behind this thought form, the intention of it. So what happens is generally we attract wrong partners. And the same case with even other limitations. So when we're talking about all the aspects of abundance, having harmonious relationships, having great physical vitality and health, and great abundance of mental peace, and also there is a abundance of time also is very important. Nowadays everyone says I lack time, I have no time. Everyone is so busy and they say I don't have time, I don't have time. We need to have plenty of time because this also abundance of kal, abundance of time. We must enjoy quietude, solitude and silence and enjoy your quietness. मिसाल के रूप में अगर जैसे कोई व्यक्ति रिश्तों में मधुरता चाहता है, तो इन दोनों का आधार कमी पर भी हो सकता है और समृद्धि पर भी हो सकता है। जब हम रिश्तों इस संकल्प कि मुझे रिश्तों में मधुरता चाहिए, इसका संकल्प एक समृद्धि के क्षेत्र से रखते हैं, तो हम अच्छे रिश्तों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। पर अगर हम उसका कमी पर आधार रखते हैं कि मेरे पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, बुरे रिश्ते हैं और मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए, तो क्योंकि हमारा जो बीज है वो कमी का है, तो रिश्तों में हमें टॉक्सिसिटी दिखती है। हम और जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं, उन रिश्तों को ही, अशांत रिश्ते होते हैं, उनको अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ना ही केवल रिश्तों की बात करते हैं, हम समृद्धि किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में आमंत्रित कर सकते हैं। भले ही अपने जीवन में शांति हो, भले ही अपने जीवन में समय हो, क्योंकि आजकल के समय में हमें लगता है कि समय की जो पाबंदी है, कमी है, हम सबके साथ रहती है, पर वास्तव में हम समृद्धि समय पर भी, समय के क्षेत्र में भी ले सकते हैं।
So, dear friends, the first thing is to identify what is that a condition which is called a limiting condition in your life, because it creates a kind of negative feelings in us. Nobody likes a limiting kind of condition. And one must be very, very enlightened being to even say that I enjoy my limitation. And they even thank the limitation. Oh, I am right now, this is the gift from the universe wanted me to experience this is a very deep samarpana bhav and a deep surrendered state. But it's very rare that we find any limitation in the physical plane. It triggers us. There are many feelings and emotions it triggers. तो सबसे पहले दोस्तों हमें जानना होगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं, हमने क्या सीमाएं अपने लिए आधारित करके रखी हुई है। क्योंकि हमें लग सकता है कि इस सीमा में रहना एक बड़ा उद्देश्य है, या बहुत ये मुझे मिला है और मुझे भगवान ने यहाँ रखा है तो मुझे इसमें रहना चाहिए। पर वास्तव में यह सीमा में रहना कभी कभी हाईएस्ट सामर्थ्य है, सबसे उच्च श्रेणी का सामर्थ्य है, उसको भी दबाना होता है। इसीलिए हमें सीमाओं को खोलना सीखना चाहिए। Yeah, Hitesh, we can hear. I think last phrase, can you repeat? It's all right. Yeah, yes, Hitesh. Yes sir. You are back. Okay. Yes sir. Sorry. No problem. So you can you repeat the last sentence? Sir, I did not hear the last sentence. I think yeah, because we couldn't hear your last sentence. It froze. Okay. Yeah. All right. Okay. Yeah. तो अगर हम अपने जीवन में समृद्धि को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी जो हमने अपने लिए सीमाएं आधारित की हैं, निर्धारित की हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपनी सीमा को जानेंगे तभी उस सीमा से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। So right now, to demonstrate okay, this, sir? yeah, it's very clear now. I would like to request someone to volunteer to so that I can ask few questions to demonstrate everyone understands this principle, what I am trying to say. So can anyone, yeah, can anyone volunteer for a kind of demonstration? Someone commented. Yeah, Prachi ji. Okay, yes. Prachi ji, can you please turn on your camera? Yeah. Prachi ji, thanks for volunteering to be in the demonstration. Good morning. And can you tell about anything which is limiting in your life? Any limiting condition, anything, any sphere of life? Okay, so well, I'm blessed with a happy family, and You can speak in Hindi language, nothing. man. You can speak in Okay. Hindi. Yeah, I can understand Hindi. Yeah. Okay. So परिवार अच्छा है and कमी नहीं है such, but still एक barrier है सामने। मुझे मतलब मेरे पति सक्षम हैं कमाने में, घर की जो भी जरूरतें हैं सब पूरा करने में। So I need to be financially independent, और वो मेरे लिए इतना कंपेलिंग हो गया है कि अब वो मुझे एक बैरियर की तरह दिखने लगा towards getting that oneness in family.
because I missed a sentence in between few words, and ओके yeah. मैं ये कह रही हूँ कि घर में किसी चीज की कमी नहीं है, घर में हर तरह Right. की संपूर्णता है, संपूर्णता है लेकिन जी। हर संपूर्णता है, किसी चीज जी। की कमी नहीं है। जो जरूरत आती है हर वो जरूरत पूरी होती है। लेकिन एक बैरियर मैंने क्रिएट कर लिया है कि आई नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और वो Oh, right. मतलब वो अच्छी चीज है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन हम्म वो जो एक धुन सवार हो गई है ना सर पे, वो अब एक बैरियर की तरह बन गई है, जो शायद मुझे जो आती हुई चीजें हैं वो रुक जा रही है मेरे पास। क्योंकि हम्म मैं पहले भी जैसे वर्क करियर में मेरे साथ जब जब तक मेरे सर पे ये धुन नहीं थी ना, चीजें मेरे पास इजीली आ जाती थी। लेकिन जब से मैंने देखा है कि ये धुन आ रही है, कुछ चीजें आने में रुक रही है, मेरे पास आती हुई चीजें रुक जाती है मेरे पास। सो आई नीड टू ओवरकम दैट बैरियर। Understood. Yeah. And so you need to become financially independent, and which is वो becoming ऑब्सेशन सा हो गया है, वो ऑब्सेशन सा हो गया है कि obsession ho gaya. जी जी. Generally, any kind of, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। yeah, that's so true. Thank you. And any kind of neediness and desperateness and obsessive kind of tendency, it comes from really in the background a lack condition. So someone wanted to be financially independent. I want to be financially at any cost. There is a tremendous force in them. It comes from the background of what is called as a kind of limiting kind of condition. If we look into your past conditions in your childhood, or there is a desire in you in the past, which is created, which is not now, long back, maybe in a seed form, this thought form is installed in you, that you have to be physically, financially independent, and otherwise I will get stuck. I will not be visible. I will not be honored. I will not be respected. I will not be independently free, have freedom as a woman. So something like that, in the past, that thought form is created. So this is so what you desire right now, what you would like to create in the future, has no energy when there is desperateness which is coming from the past. What is the most important thing that today I am offering to all my friends here is, first, recognize the inner abundance. Be okay with that, whatever the past limitation. I need to be independent because I am not financially independent. I am dependent on someone. I am dependent on someone which is not really, I'm not feeling good about it. There is an emotion, there is a feeling. So what happens, I'll ask you, Prachi, what happens to you when you are financially dependent on someone? What is that feeling or emotion it generates for you? The opposite of it. Yeah. So the feeling it generates is Can you come first I'm closer to answerable. the mic because we can't hear I think Yeah. somewhere, yeah, okay. Yes. Am I audible now? Yeah, So it's better. पहली चीज आती है कि आई एम आंसरेबल, मुझे जवाब देना पड़ता है, मुझे Uh-huh. पूछना पड़ता है, आई हैव टू आस्क फॉर मनी, Ask for everything, money. Yeah. कोई मेजर एक्सपेंस है, यस, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मेरी डिजायर्स हैं, बट अदर वन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी डिजायर्स नहीं है, तो वहां पे मुझे मेरा मन मारना पड़ता है। तो Right. इंडिपेंडेंट होने का तात्पर्य ये है कि ये मेरी डिजायर्स हैं, ये चीजें तब क्रिएट हुई मेरे मन में व्हेन आई एक्नॉलेज कि ये डिजायर्स तो मेरी हैं, जो पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। Right. मेरी डिजायर्स को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, भौतिक इच्छाओं की मैं बात कर रही हूँ, मतलब वर्ल्डली प्लेजर। तो अगर ये डिजायर्स को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू अर्न।
Right. Yeah. So when you are asking, when you are dependent on someone, asking for uh, everything, every desire that you have, something that you want to buy, you're asking for money. And how does it feel to you when you need to ask someone and for every small thing? How do you feel? It doesn't feel good. It doesn't It feel good. feels Yeah. no. It doesn't feel good. Yeah, it doesn't feel good because we are creating a intention out of that feeling, a negative feeling, a negative emotion that was not desirable for us. We desire something better. We want to be financially independent, we can see that these two states, there is a past condition that is existing in you where you have to be dependent on someone, ask for something, every small thing, and it's not really good feeling. It feels low. I am so helpless. I need to ask everything. The permission is needed. Sometimes they may say no. You have to also wait. When money comes, and then you can fulfill the desire. And there's a desirable state in the future that you would like to create. The desire is to create surplus where you are financially independent, where you're creating what you are desiring through that money. So these two states are very important initially to identify your past and your future. And from this past, this future cannot be created. We need to create a third state. That's what I'm trying to tell you now. If you right now embrace these two states, maybe Hitesh can briefly tell the essence in Hindi. Yeah. Yes, sir. I understand, sir. Yeah. So maybe I can do some bit for the others, Prachi. Yeah. Yeah. Oh. So जैसे कि प्राची जी ने कहा कि मैं अपने जीवन में चीजें इसलिए कमाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास या मुझे किसी से मांगना पड़ता है, मैं मांगना नहीं चाहती हूँ और अपने ऊपर आश्रित रहना चाहती हूँ, इसीलिए कमाना चाहती हूँ। और जब वो अपने आप इस चीज के बेसिस पे कमाना चाहते हैं तो वो एक दौड़ भाग में, जैसे हम कहते हैं कि एक जुनून सवार हो जाता है कि मुझे पैसा कमाना है। अब सर इस चीज को जब एनालाइज करते हैं तो उनको बताते हैं कि आपका जब किसी चीज का जुनून सवार हो गया है तो यानी कि इसकी जो ऊर्जा है वो एक सीमित ऊर्जा है, यानी कि हम कमी की ऊर्जा से किसी चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका जो रूट हो सकता है वो हमारे बचपन में किसी भी कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि मैं किसी चीज पर आश्रित रही हूँ और मैं जो करना चाहती थी, जो मेरा मन था, मैं उसको नहीं कर पाई, एक्सप्रेस नहीं कर पाई, इसीलिए मैं उस कमी के क्षेत्र से काम कर रही हूँ। तो मेरा पास्ट अगर कमी का रहा है तो मेरा फ्यूचर भी कमी का ही होगा, क्योंकि अगर मैं दौड़ भाग में लगी रहूंगी, पास्ट में पीछे मैंने देखा, तो फ्यूचर कैसे मेरा दौड़ भाग के बिना होगा। तो इसीलिए हमें एक तीसरी अवस्था बनानी होगी, जो तीसरी अवस्था जो हमें बताती है कि मैं समृद्धि के क्षेत्र से भी अपने जीवन में जो अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ वो बना सकती हूँ, ना कि पास्ट पे जो कमी का मेरा बीज रहा। Right now, thank you, Hitesh ji. And Prachi ji, can you have three pieces of paper or three objects in front of you? Do you have it? Three objects, no? Three objects or three pieces of paper? Anything is okay. So this process I'm demonstrating right now for everyone. So we'll all do it also after watching this demonstration. इस प्रोसेस के बाद आप सब भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, मैं आप सबको करवाऊंगा। Right, yeah. Prachi ji, your mic is, I think, disconnected. This headphones mic is disconnected. Am I audible now? Is better, is much better. Yeah. Okay, you have, ma'am? Yeah, you have, okay. So
You can, is object or piece of paper? I have taken 3 objects. Three One objects. is 3 Okay, objects. 3 objects. You name one object as the limiting condition from the past. For Okay. example, dependent on someone for money, finances. Okay, that's the Okay. object. The So the second person object from the past has to be from my childhood, or can be any past life, doesn't matter from Okay. where. Even the recent past also is okay. Recent Fine. past or childhood past, or it doesn't matter, the past. Okay. And the future, the object, your desire to create, there is an intense desire, there is a intention in you. Okay, that's the second object. Okay, the third object is your inner state of abundance. Within you, everything already existing. The only thing is you need to recognize it, wake up to it, waking yourself up to that inner state of abundance. Okay, that is the third object. Okay, can you keep your hand on that first object and close Yes. your eyes, just tune into it. And this object symbolically representing all that past limitation where you have to be dependent on someone for money and finances, and waiting, asking for permission, asking for to have some money to buy something, and all that. Just tune into it. Notice your feelings. And you can let me know how you feel in your body. And you can be with eyes closed or eyes open, doesn't matter, but you can tell. So basically, when I am in this situation where I have to ask, so Yeah, I'm having that कह सकते हैं ना, गले में कुछ अटकता है. hatakata hai. Ji, हाँ. that's the feeling Gulp of in the throat. choking. हाँ. Like a Gulp in the something. throat. Yeah. Yeah. And what is the emotion behind it? This physical sensation, lump in the throat, and what is the emotion attached to it? Emotion of being not being equal. Not being equal. Yeah. So थोड़ा when you नीचे हूँ, niche, I'm at lower standard. And lower standard. So Yeah. how does it feel when you feel that you are at a lower standard, not in equal? How does it feel to you? It's not good. It's not good. What is Sad. not good? Sad. So just keep focusing on that sadness that you have. What else do you feel when you feel sad? Because the lump in the throat that you get, that feeling you get, it has all that, not just only sensation, there are many emotions attached to it. There is unequalness. You feel lesser, you feel not so good, you feel sadness. There's also a feeling, I can say, not being appreciated for. Not appreciated for. Yeah, Yeah. जैसे कि एक एहसान किया जा रहा है मुझ पे, अगर मुझे ये प्रोवाइड किया जा रहा है तो. Right. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. And
Right now, you may open your eyes and just shake your hands. Just shake your hands Okay. and look at the second object, which is you named it as the future object, your desire, your intention that you want to. You are working on this financial independence, this thought form, this intention, this sankalpa since many years, right? Hmm. Yeah. So you can keep your finger on it. Yeah. Just notice your feelings, notice your So sensations in the basically, body. second is the state of having achieved that, or Having achieved that, having achieved that. But some, they may feel that after achieving, oh, I don't want it, you resist. Some, they gladly accept, embrace that state, but some have a kind of internal resistance. Do I really deserve this? All those feelings may come up, and just notice what is coming up. first sensation which is coming is peace, Peace, yeah, relax, yeah, relax, peace, relax. relax, Good, very good. and uh, the second sensation which I am getting is my mental chatterbox is off. Okay, that's good. बिकॉज दिमाग में वो स्टोरीज नहीं बनानी है कि ये चीज चाहिए तो कैसे बोलूं. Right. So your mind is off and it's much more tranquil, peaceful, Yeah, no peaceful. thought. Yeah, हाँ, very good. That's wonderful, peaceful. peaceful. And then you just take off your fingers, lay a hand on that from that object, and you may open your eyes. Just shake off your hands. Just look at these two objects, the first one and the second one. The first one is your past limiting condition, and the second one is your desirable condition. And you have tried many years, move from here to there, from the past limitation to the future desire. How much you could succeed in that? I have succeeded, but उतना नहीं जितना Yeah, चाहिए था. not fully. Yeah. हाँ. Okay. Yeah. Just a very small step, baby steps लिया Baby है. steps. Yeah. अभी डीप लेना है. Yeah. Yeah. और रादर कहूंगी कि एफर्ट है, Mm-hmm. लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना वो नहीं Mm-hmm. आ रहा. वो नहीं आ रहा है. वो नहीं आ रहा. राइट. जी जी. और इसी एफर्ट पे पहले, आश्चर्यजनक बात है, इस एफर्ट पे या इससे कम एफर्ट पे मुझे रिजल्ट्स आ जाते थे. जब मैं इस Mm-hmm. चीज के पीछे, ये मेरे वही मैं बोलूं, जब मैं इस चीज के पीछे भाग नहीं रही थी, जब मेरे लिए कंपल्शन नहीं था, जी. जब मैं इसको इजी ले रही थी, व्हेन Mm-hmm. मनी वाज नथिंग फॉर मी, मैं बस शौक के लिए कमाना है, Mm-hmm. उस जोन में थी. चीजें यूज्ड टू फ्लो टू मी, मेरे Yeah. टारगेट्स अचीव हो जाते थे, सब कुछ हो जाता था. लेकिन जब मैंने इस चीज को दिमाग पे लिया है कि ये तो करना ही है, तो मतलब चीजें बॉर्डर लाइन पे आके रुक जाती हैं, बिल्कुल लिप पे Correct. आके. Yeah. Yeah. Thanक you. And can you keep now your both the hands same time on the two objects? ऑन One on मीन्स right. Yeah, a left hand and right hand. Use both the objects. ओके, वन Left सेकंड. hand on one object and the other object on the other hand. Yeah, फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट? first and second. ओके, वन And सेकंड. by doing that, you are saying that to the past object and the future object, your desirable state, same time you are okay with both. You're saying okayness. I'm okay with the limitation. I accept this limitation totally, totally. There is no internal resistance to this limitation. Yeah. And the future, the object, you are okay fully with it also.
the desirable, your object desirable state, you're okay with it. Yeah. Yes, sir. Yeah, you did it. Very good, Yes, sir. Prachi. Wonderful. Yeah, once you're okay with both states, and keep your hand on the third object now. The third object is the inner abundance, the state of abundance within you. There's nothing that is lacking in you. There's so much of exuberance, abundance, overflow of everything. Prosperity is one of the dimensions of it. There's abundance within you, in your consciousness that is residing. You're tuning into that, the third object. Just shift into that completely. And as you tune into that, where you are the epitome of abundance, you're embodying all that abundance, all aspects of abundance. How does it feel to you? Um, frankly बोलूं तो it feels like floating in the air. इतना relaxed Yes, and it's peace. it's peace. It's peace. Yeah. It's peace. It's कोई floating in the stress नहीं है. air. कोई stress nahi hai. This is Stress. this is the energy on which you can create now many intentions. This is the platform, and this is the springboard where a satellite can be launched. So far, your satellite financial independence launched on a different platform. The past platform, which is shaky. I need financial independence. I don't have it. I lack it, and I need to get a lot of money and all that. It's a very shaky platform. Now, what you're creating is a new platform. It's a new launch pad for your success. So this is your ideal state, inner abundance state. More you establish, anchor yourself in that and create a thought form, it will be very easy to manifest. Can you again keep on that third object, and just, yeah, and get that floating feeling and peace, which is all pervading. It's not just a limited peace, it's unlimited peace. This floating feeling is completely feeling like all the stress has gone away from you completely, from each cell of your body. Every cell of your body uh, is tuned to the vibration of abundance. So just get this feeling from top of your head to the tips of your toes of your feet. In this state, it can be called as your soul state, the state of consciousness where you are experiencing this inner abundance. And in this state, you have free will. What thought form would you choose now? What intention you would like to make in this third state, this state of being where you're abundant? What is your intention? Intention
let it be easy. Let it be easy. Yeah. Yeah. Effortless, you mean effortless? Let it Not be. effortless, efforts रहेंगे, efforts हैं, Yeah. but एक ease है. Ease, there is easiness in your effort. हाँ, easiness Yeah. in my thoughts. In your Not in thoughts. my, not in my efforts. Yeah. But एक दिमाग में भागा दौड़ी नहीं है. Mm-hmm. दिमाग Yeah. शांत है. Yeah. Right. So right now, I would like you to just open your eyes and move to again the third object, the second object, your desirable, your desire that you intended to manifest, financial independence. You can keep your finger on that. Yeah. Okay. Yeah. How does it now feel? Just close your eyes and कोई फीलिंग नहीं आ रही है. कोई feeling, neutral feeling, right? But it's good feeling. When you don't have feeling, is it No. good or? मतलब कोई फीलिंग नहीं आ रही है और इस चीज पे कोई बुरा नहीं लग रहा. ये Yeah. शायद Okay. पहले का जो स्टेट था ना, Yeah. कि ठीक है, वो ये ठीक उसी है. स्टेट. हाँ, प्रेशर नहीं है Okayness. किसी चीज का. No pressure. Okay. इसलिए That's कोई a फीलिंग. really, it's a good one. Yeah. That's really wonderful. That's really wonderful. Just how does it feel if you keep on the object number 1 now, your finger? Just check it. सेम फीलिंग, कुछ भी फीलिंग नहीं है. Neutral. Okay. कोई फीलिंग. Okayness. Yeah. Yeah. That's really beautiful. That's beautiful, Prachi ji. That's really wonderful. You may open your eyes. Thank you. It's really, really very well done, Prachi ji. And thanks for volunteering. थैंक यू सर. And you hope you got the principle, या. what I'm trying to share and tell. Yeah, यस सर. thank you. थैंक यू सर. And friends, right now, I think Hitesh ji will just give the essence of this, how we create from the state of, not from the lack, but from the state of inner abundance. Anything that we experience as a lack, from there you create an intention, it's going to backfire. You will not fully manifest that. You need to really go into the inner abundance state, gather, harness all that consciousness and energy of you, pull up all that, and then you effortlessly manifest. Of course, efforts are need there, but as Prachi ji told, it's like there's no thought forms of stress. There's no desperation, neediness, clinginess, all that will not be there. Yes, Hitesh ji. तो जैसे कि हमने अभी की एक प्रोसेस में देखा कि अगर हम सीमा के क्षेत्र यानी कि कमी के ऊर्जा से जब हम अपने संकल्प को लेते हैं तो जो भी मैनिफेस्ट होगा वो कमी से ही मैनिफेस्ट होगा और कमी ही मैनिफेस्ट होगी. पर अगर हम अपने इनर अबंडेंस के क्षेत्र में जाते हैं, अपने भीतरीय समृद्धि के क्षेत्र में जाते हैं और उस क्षेत्र से जब हम संकल्प लेते हैं तो जो भी बनेगा उसमें भी समृद्धि दिखेगी. तो इसी चीज को अब हम हम सब प्रैक्टिस करेंगे. Yeah, right now, dear friends, all of you can choose 3 objects. It could be any object, pencil, pen, and keychain, or spectacle, could be anything, 3 objects.
You can name them as 1, 2, 3. The one is the past limitation. The second is your future desirable event, what you are intending to create, manifest. And the third one is inner abundance. If you don't have objects, you can write on a piece of paper, the 3 pieces of paper. दोस्तों आप भी 3 ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, 3 वस्तुएं ले सकते हैं. अगर आपके पास 3 वस्तुएं नहीं है, जैसे कि स्पेक्टिकल्स और कुछ भी ऐसा, तो आप 3 पेपर्स की चिट्स बनाकर भी लिख सकते हैं. पहले क्षेत्र में पहली चिट पे आपको लिखना है कि आपके पास्ट के जो इन्फ्लुएंसेस रहे हैं अबंडेंस को लेके और जो लैक के आधार पर रहे हैं, और दूसरे पर आपको लिखना है कि आप फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, किस पॉसिबिलिटी पे जाना चाहते हैं, और तीसरे में आपको अपना लिखना है कि जो आपकी भीतरी समृद्धि का क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों को इन 3 वस्तुओं पर या 3 पेजों पर लिख लीजिए. So the object number 1, you're going to know that it is the object about the limitation, a limiting condition. From where you long back, you created a thought form, an intention to manifest something you are desiring. Could be money, could be harmonious relationships, could be spiritual growth, could be a project work which is pending, you want to complete it, want to finish some project work, could be in the domain of spirituality or spiritual goals, could be anywhere, anything that you felt a lack, that is the lack condition, the object number 1. Object number 2 is your desirable future condition, future state, where whatever that you're going to manifest, which has already manifested, that is going to represent that. Okay. So it need not be specific, could be anything, any limitation, any limitation. And the third one is inner abundant state. Inner means inside you, the state of abundance in all things exists. That feeling of abundance exists, all of us. We can access that. Easily we can access that. Once you have identified the 3 objects, let's begin now. The first objects, look at the arranged 3 objects in front of the table, or could be on the piece of paper on the floor, or could be anywhere. Just have that space. And first object, you can place your hand, fingers on it. Just finger, you can keep your finger on that. Yeah, go ahead. पहले वाले ऑब्जेक्ट पे जो आपने लिमिटिंग इम्प्रेशन, जो पास्ट की शर्तें हैं, जो हमारी सीमाएं हैं, उस ऑब्जेक्ट पे अब आपको अपनी एक उंगली रखनी है या आप अपना हाथ रख सकते हैं. Notice the sensations in the body and notice the feelings and emotions attached to this sensation. देखिए कि कैसी भावनाएं, कैसी तरंगे आ रही हैं जब आप इस क्षेत्र को महसूस करते हैं. How do you feel if you are experiencing that limitation in the past, that limiting condition in the past? And how does it feel? What do you experience? How does it feel in the body? How do you feel it in the mind? What kind of thought forms you get? And what are the emotions that you feel? देखिए कैसा फील करते हैं जब आप इस सीमा के
सीमा के क्षेत्र में आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को लेकर जाते हैं? आप अपने शरीर में कैसा महसूस करते हैं? आप अपने मन में कैसा महसूस करते हैं जब इस सीमा के तत्व को, सीमा के क्षेत्र को महसूस करते हैं? तो शर्तों का क्षेत्र। And right now, you name that feeling and emotion. Name that feeling and emotion. In that limitation, what is that emotion that you feel when you have been constantly experiencing that limitation? Feeling hurt, not happy with it, to cry. Yeah. Many feel sad, many feel lonely, helpless, angry, many limiting emotions, many emotions it triggers in us. जो भी Not, भावना आप yeah. इस क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं, आप उसे एक नाम दे सकते हैं। कोई भी नाम हो सकता है, गुस्सा, द्वेष, सैडनेस, उदासी, किसी भी प्रकार से। Now, slowly you can remove your finger, your hand from that object, the first object, and look at the second object. You named it as a future desirable state object. अब यहाँ से अपनी उंगली हटाते हुए उस फ्यूचर स्टेट वाले जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं भविष्य में, उस ऑब्जेक्ट पर अपना ध्यान एकाग्रचित करें। How do you feel when you have manifested your desire in the future? Just notice that feeling, that experience of it. देखिए What कैसा महसूस करते हैं जब आप उस भविष्य को, जो आप पाना चाहते हैं, उसे पा लेते हैं। देखिए कि शरीर में कैसा महसूस करते हैं, मन में कैसा महसूस करते हैं। How do you feel it in the body, or how do you experience in the body in this future manifested state? कि कैसा शरीर में, मन में महसूस करते हैं कि जो भविष्य में क्रिएट करना चाहते थे, उसके प्रति। Do you feel happy? Do you feel excited? Do you feel energetic? Do you feel sensation of lightness? What is that feeling, sensation in your body? देखिए आपको अच्छा लग रहा है, ऊर्जावान लग रहा है, कैसा लग रहा है? किस प्रकार की तरंगे आपके शरीर में आ रही हैं? Slowly you can remove your hand, your fingers from the second object. Now look at both the objects, the first one and the second one. अपना हाथ अब दूसरे ऑब्जेक्ट से हटा लें, दूसरी वस्तु से। अब दोनों, पहले और दूसरी वस्तु को देखें। One is the lack condition. The second one is the manifested state of whatever you desired. पहली हमारी कमी की क्षेत्र और दूसरा जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं, वो क्षेत्र। Right now, keep your both fingers on both objects at the same time.
अब इस समय एक एक उंगली दोनों ऑब्जेक्ट्स पर रखें. Your left hand and right hand. Same time, you can keep on object number 1 and object number 2. दायां और बाएं उंगली एक समय पर पहले और दूसरे वस्तु पर रखें. Be okay with both states. दोनों के प्रति ओकेनेस जगाएं. ठीक है का भाव जगाएं. You are okay with the lack, you are okay with the manifested future condition, you are okay with both. आप अपनी कमी के क्षेत्र के साथ भी ठीक हैं, अपने भविष्य के क्षेत्र में भी ठीक हैं, आप दोनों के साथ ठीक हैं. Notice that okayness that is establishing in you. देखें कि कैसे ये ठीक होने का भाव आपके अंदर और विकसित हो रहा है, दोनों क्षेत्र में. Now you can remove your both the hands from the object number 1 and 2. दोनों वस्तुओं से अपना हाथ हटाएं. Right now, you can keep your right hand on the third object, which is representing your inner state of abundance. It has all aspects of abundance. It's the great, the pool of energy of abundance. You're putting yourself inside this pool of abundance. अब इस समय अपना दायां हाथ, उसकी उंगली अपने तीसरे क्षेत्र में लेकर जाएं. वो क्षेत्र जो समृद्धि का क्षेत्र है, जिसमें हर प्रकार की समृद्धि, प्रचुरता मौजूद है. It's unlimited, limitless, expansive. इसकी कोई भी सीमा नहीं है. निरंतर इसका विकास हो रहा है. And experience it in the body cells. Feel it in the body, the vibration of this abundance in each cell of your body. समृद्धि की तरंगों को अपने शरीर के हर अणु में, हर कण में महसूस करें. Notice how you're feeling and what you are experiencing. What is the state of experience, the experience of this abundant state? देखिए कैसा महसूस करते हैं, किस प्रकार का अनुभव आता है इस स्तर पे, समृद्धि के स्तर पे.
in the state of abundance, experience of internal and the experience of abundance within your consciousness, I would like you to exercise your free will. Free will can create many sankalpas, many intentions. स्मृति के इस क्षेत्र में जब आप अंदर प्रचुरता महसूस करते हैं, समृद्धि महसूस करते हैं, इस स्तर से आप अपने लिए अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल करें, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करें और यहाँ से इस स्वेच्छा से जो संकल्प लेना चाहते हैं वो लें। It's the quantum field. It has all possibilities, all probabilities already existing. It has all the energy to manifest in this quantum field. This is the abundant field within you, within your consciousness. ये एक क्वांटम फील्ड है, इसके अंदर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। From this state of abundance right now, whatever the thought forms, intentions are created, you may open your eyes and look at the second object, which is the desirable future object. Is it the same or is it updated, upgraded version of your desire or intention? Look at it. स्मृति के इस क्षेत्र से अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और दूसरे वस्तु को या दूसरे चिट को अब आप देखिए जो भविष्य में आप पाना चाहते हैं। देखिए कि जो आपने भविष्य के लिए पॉसिबिलिटी लिखी थी, क्या वो बदल गई है, उसमें विस्तार हो गया है, कैसा महसूस करते हैं? As we expand internally in our inner consciousness, our free will says this is much more better things than what we have intended for before. You may upgrade your intentions. It's all possible. It's all editable and updatable, upgradable. स्मृति के क्षेत्र से जब आप अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल करते हैं, तब जो भी पॉसिबिलिटी आपने अपने फ्यूचर के लिए बनाई है, वो सब पा सकते हैं, वो आपके सामर्थ्य में है। Now, you can keep your hands on that second object, maybe a little bit updated, upgradable, upgraded. You can, or it's the same as before. Just keep your hand now on that with the quantum energy field, consciousness field that you have awakened, abundance state with inside you, which is awakened. You can now reach to that second object now, your future desirable state. अब इस समय आप अपनी उंगली को अपने दूसरे क्षेत्र में, दूसरी चिट पर, दूसरे वस्तु पर फिर से लेकर जाएं, आपके फ्यूचर के क्षेत्र में, भविष्य के क्षेत्र में। वो क्षेत्र जो अब विस्तृत हो सकता है, आगे और अपडेट हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है। देखिए कि इस अवस्था में सब कुछ जो पाया जा सकता है, कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं।
सब कुछ बदला जा सकता है। Right now, with your eyes closed, you may fully visualize, picturize yourself in that future where you have already manifested this goal इससे and where all the universal forces are conspiring to manifest this reality for you. And you are very grateful to the universe, all the forces that assisted you in manifesting this goal. And you have deep gratitude and you just tune into that state. इस समय आप अपनी आंखें बंद करते हैं और इस फ्यूचर की पॉसिबिलिटी में जब आप अपनी ऊर्जा को लेकर जाते हैं, देखिए कि कैसा महसूस करते हैं कि आपने इसे पा लिया है जिसको आप पाना चाहते हैं। उस भविष्य को आपने बना लिया है। इस सृष्टि की सारी शक्तियां जो इकट्ठे मिलकर आपकी सहायता कर रही हैं, वो सारी शक्तियों के प्रति आप कृतज्ञ हैं, आप धन्यवादी हैं। Whatever that images, pictures that you see in that future, as you imagined it right now, you just surrender it to the universe now. Send it out through your crown into the universe. जो भी Just भविष्य के जो भी दृश्यों की आप संकल्पना करते हैं इस अवस्था में, अब इस समय आप अपने सहस्रार चक्र से उसको, इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स की शरणागति में देते हैं। as you surrender to the universe, you trust the universe that you're not alone in this creation process. There are many forces which have joined you, which are joining you, and which will manifest this reality. You trust the universe right now. Just stay in this silence for 3 minutes. Deep gratitude. इस समय जब आप यूनिवर्स की शरणागति में जाते हैं, आप यूनिवर्स को, सृष्टि को ग्रैटिट्यूड देते हैं कि जो सारी शक्तियां जो आपके लिए काम कर रही हैं और जो कर रही हैं, उस सब के प्रति ग्रैटिट्यूड। अगले 3 मिनट के लिए इस अवस्था में, इस शांति में रहें।
1 more minute. Just stay in that deep surrender. शरणागति के उस स्तर में, उस भाव में 1 और मिनट के लिए बने रहें। समर्पण के भाव में। Okay, my dear friends, before you open your eyes, I'd like you to just bring the light that you can visualize on top of your head. Bring it down to your third eye, like a flame, like a candlelight, and bring it down to your throat, bring it down to your heart center. Take a nice deep breath. आंखें खोलने से पहले महसूस करें कि आप उस प्रकाश को एक ज्योत के रूप में आप अपने शरीर में ला रहे हैं, अपने तीसरे नेत्र में, अपनी विशुद्धि में, अपने अनाहत में। उस ज्योति को ला रहे हैं। Now slowly you can rub your palms and place them on your eyes, touching your eyelids. And with a beautiful smile from your heart, an abundant smile, you may slowly open your eyes. इस समय हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे एक समृद्ध मुस्कान के साथ। Yeah. So an abundant person is a giver. A giver is called as an abundant being. जो समृद्ध व्यक्ति होता है वो देने वाला होता है, जो देता है वो समृद्ध है। So today we practice an abundant smile. We give whoever we look at on the street, even the strangers, we smile at them. It's contagious. We smile. It's like saying non-verbally through your smile that I see you. You are also abundant, just like me. You are making everyone abundant. इसीलिए आज हम इस देने के भाव को, इसका अभ्यास करेंगे अपनी स्माइल से। किसी को भी मिलेंगे, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो जिसको हम जानते नहीं है, उनकी तरफ स्माइल करेंगे और स्माइल करते हुए यह याद रखेंगे कि उनके भीतर उस समृद्धि को देखेंगे कि आप भी समृद्ध हैं। So it's such a pleasure meeting you all, dear friends. You stayed in spite of the time limitations. From 7:30, we reached to 8 o'clock right now. Thank you for staying back. And it's so wonderful. There's some beautiful
sharings that's happened. Seema Rajesh, thank you so much, sir. It was so easy to understand this concept objectively, that how we are operating from three different frequencies of lack, past limitation, frequency of fulfillment, future wish fulfilled state, frequency of manifestation, from where we create. That's really wonderful. Thank you. Thanks for expressing all that. Your smile is contagious, sir. That abundant, peaceful smile. Thank you for the wonderful session, sir. Thank you, Manjula ji. And thanks, Hitesh. Gratitude to Neutral sir, Hitesh ji, Shraddha. And all that what you're expressing in the chat box. Thank you, dear friends. Appreciate all of you, your participation. QLU is an abundant quantum field of wisdom, and QLU is a giver. QLU offers wisdom, an abundant wisdom, and please participate every day without fail, and unless it is very urgent, not to skip these 9 days. It's like a very intense, very deep dive into yourself, these 9 days, Navaratris. And it's so helpful. We make a difference in our lives. And thank you. And Harika ji, if you're here, you may show up. Yeah. Anything that you would like to announce, tell about tomorrow, or anything that you want to say. Thank you. And Hitesh ji, thank you for your beautiful translation. Thank you. I appreciate it a lot. It's my pleasure. Thank you, sir. Thank you. So, thank you, sir. दोस्तों, हमारा ये 9 दिन का जागृति प्रोग्राम बहुत अच्छे से शुरू हुआ है और ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे डॉक्टर न्यूटन ने कहा, कोई भी अर्जेंसी ना हो तो हर दिन आप अटेंड करें। हमारा हर दिन हमारे जो ट्रेनर्स हैं, सरप्राइज है। हम लोग अनाउंस नहीं करने वाले हैं किसी का नाम भी, पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये नवरात्रि के समय ये हमारे लिए एक गिफ्ट है QLU की तरफ से, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी की तरफ से। तो हम इसका पूरा लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन, थैंक यू सो मच हितेश जी। हितेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस थैंक यू वेरी मच। और सर, QLU, हारिका, एवरीबॉडी, मुझे ये मौका देने के लिए, आप सबके साथ जुड़ने के लिए। नवरात्रि हमारे लिए बहुत, अगर मैं कहूँ कि कोई त्योहार हम अपने घर में मनाते हैं तो नवरात्रि बहुत खुशी से मनाते हैं। दिवाली से भी ज़्यादा हम नवरात्रि को महत्व देते हैं अपने दिल में, अपने घर में। और जब से ध्यान करना शुरू किया है तो ऊर्जा को कैसे अपने जीवन में लाना है और उसको कैसे किसी चीज पे इस्तेमाल करना है, ये नवरात्रि एक बहुत सुंदर ऊर्जा के साथ अपना संपर्क बनाने का, कनेक्शन बनाने का बहुत अच्छा एक तरीका है। क्योंकि जब आप अपनी जीवन की ऊर्जा को एक सही जगह पर लगाते हैं तो देवी माँ शक्ति आपके अंदर खुद ब खुद ग्रो होने लगती है। तो हमारे लिए तो फेस्टिवल शुरू हो गया है और फेस्टिवल का बहुत सुंदर आज जो शुरुआत हुई है सर के साथ, सर के चेहरे के साथ, एक सुंदर मुस्कान के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So beautiful. Hardik Subhkamnaye. Devi Navaratri celebrations. Wish you all happy celebrations, dear friends. Thank you all.